That how to make Google form on your Google. Simply sign in your Google account as I have signed. You can see here mine, and then go to these marks. Simply go to your drive. Your Google Drive will be opening on the next page in the next tab. So Google Drive is like working on, you can see. Okay, on your very left you can see that here there are lots of options available. Oh, go for the new, and then click it, and then you can see Google Doc, Google Sheet, Google Vivid, and then Google Form. Click on the Google Form, and then a new tab will be opening. Now you can see that here this kind of interface will be opening. You can edit it very easily. Simply type your questionnaire here. Okay, now you can see its title, and you can title the questionnaire here as well, and then move on to you would write the informed consent here about your informed consent, and we will copy paste all the data here. Fine. And you can see that the spelling check is also active here, so there's no need to be worried about it. You can change the style, you can bold it, or you can like do a lot of things. And then you just move on to the next section, untitled questions. So you would start writing your questions here. First you will add one question here, and then you would have to choose from here multiple choice question. Either there are six, either there are checkbox. The checkbox can be here, for example, like I'm asking here the demographic information name. No, I don't name. It's like starting from gender, and I want option B is female, and the option B is male. Okay, and then you will have to, you can see that just activate it because this is a required question, so we'll activate it. So do not need to be like retype again. Make it like proper number one and G capital. Okay, you can make additions, fine. And then you will simply copy it here, and then the previous question you typed, it was like copied here. Okay, one more thing, that in questionnaires we do have, you can see that sections. So go to the, when you will be like on the very right corner of the question, for example here you can see there are multiple options. See what are these. It's a section, so I'm adding up a section here, and you can title the section as demographic information. Okay, so this is how you can add up sections. And after, when once you are like, okay, demographic sections should be started from here, but I think that was extra, so मैं इसको delete कर दूंगी, and I will be like starting from here. This is section 1. So इसको हम कर देते हैं, section 1 is, so is, you will have to divide the whole of it is not actually section 1, it is action. इसको हम रिमूव कर देंगे सेक्शन को यहाँ से. So you can add sections here, you can make more sections, and then you will start adding up the questions here. Okay, now look at the very first, ये right पे जो icons हैं इनको गौर करें. यहाँ पर it's a color palette, so you can change any color of your choice from here to get it done. Okay, this is the theme, this is the, even you can add the image here. So if I wanted to add the image in my Google form, so I can do that. So I wanted an image of work and school, of course, because it's it's an educational one, so I'll be choosing these pencils. Okay, and then I'll be getting it okay like with. So you can see that this picture has been added. It makes your questionnaire or maybe the form more
colorful. Okay, now let's move on that what is next. You can share with whom. So if I click it, so anyone with the link कर देंगे आप पब्लिश करने के लिए। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है किसी एक को चूज़ भेजना है तो आप वो कर सकते हैं। ओके, नाउ हेयर इट इज़ द कॉपी रिस्पोंडेंट लिंक है और ये है आपकी आई बनी हुई है। दिस इज़ कॉल्ड प्रीव्यू, दैट हाउ वुड योर क्वेश्चनर वुड लुक लाइक। सो सेक्शन बाय सेक्शन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन जो है ना वो ऐसे मूव होता जाएगा। ओके, सो आप इसको प्रीव्यू मोड से हटा देंगे एंड देन यू विल बी मूविंग ऑन। और अच्छा, अब यहाँ पर एक और है ऑप्शन, इधर देखते हैं थ्री डॉट्स में। सो यहाँ पर आप इसकी कॉपी भी बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इसका लिंक एम्बेड कर सकते हैं, फ़ाइन। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर देखते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट लिंक पब्लिश करना है अगर आपने, तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसको पब्लिश करना चाह रही हूँ, आई वांटेड टू शेयर इट। सो मैंने कहा है कि एनीवन विद द लिंक, ठीक है, और मैं इसको पब्लिश कर रही हूँ। इसका मतलब है कि नाउ, और यहाँ पर ये लिंक फ़ौरन आ जाएगा। आप लंबे वाला लिंक ना लें, आप शॉर्टन करें यूआरएल को, यहाँ से कॉपी करें और व्हाट्सएप में जाके पेस्ट कर दें या जहाँ भी आपने पेस्ट करना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक इट। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पर हमारे सॉरी, इधर सेटिंग्स हैं, ये देखिए पब्लिश के साथ सेटिंग दी हुई है, इसको देख सकते हैं मज़ीद। और यहाँ पर शेयर में चले जाते हैं ऑप्शन में। अच्छा, शेयर में भी आप वही देगा, यहाँ पर आप देखेंगे जब आपको लिंक्स यहाँ सेटिंग आ रही है, ये क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज एंड देन द सेटिंग। सेटिंग में आप जाएंगे, सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखेंगे इसको मेक अ क्विज़ बनाना है तो क्विज़ बना लें, अगर आपने वैल्यू देनी है तो वैल्यू तो नहीं है इसकी, ठीक है, तो हम इसको अनचेक कर देंगे क्योंकि इट इज़ नॉट अ क्विज, इट इज़ अ क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सेज कितने लेने हैं, आपने ईमेल कलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ से रिस्पॉन्डर का इनपुट ले लेंगे, रिस्पॉन्डर को कॉपी करनी है रिस्पॉन्स की कि कितने रिस्पॉन्सेज आ गए हैं, तो आप इसको ओके कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्डेंट इसको एडिट कर सकें तो उनको एडिट ऑप्शन दे दें, अदरवाइज़ ना दें। और लिमिटेड टू वन रिस्पॉन्स है कि अगर एक बंदा एक दफ़ा ही रिस्पॉन्स करे या एक से ज़्यादा कर सकता है तो आप इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। फॉर्म जो है वो क्वेश्चंस डिफ़ॉल्ट्स हैं और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, और दिस इज़ हाउ आप अपना गूगल फॉर्म इजीली बना सकते हैं एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। Let me know if you have any other questions so I can answer your queries, and then we will be moving on. So this is actually shared for those because we have been shifted till 31st March on online. So specifically my supervisees, I'm instructed to Taskia number. Please go and use this और इसको शेयर करें।